नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है गवर्नमेंट दृश में। यहाँ सिलेबस नहीं, कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नेट, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का पावर पैक्ड सीरीज, जहाँ पे हम सिलेबस को करेंगे शॉर्ट, स्मार्ट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के जैसे रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एपिसोड से, जो कि होगा व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सीरीज बनाई गई है आपके जैसे सीरीज एस्पिरेंट्स के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो द फर्स्ट सेक्शन इज पॉलिटी क्या है। So you need to understand what is the meaning of politics in a clear, definite way. Polity basically एक system है जहाँ rules, powers, law as well as rights मिलके एक organized governance बनाते हैं। Indian polity cover करता है constitution, government structure, fundamental rights and duties, as well as judiciary, parliament and elections as well. The Indian constitution was adopted on 26 November 1949, but it came on force from 26 January 1950 onwards. और Indian constitution के drafting committee के chairman थे Dr. B.R. Constitution took around 2 years, 11 months and 18 days to be constructed, and ये start हुआ था 9th December 1946 at the first meeting of Constituent Assembly. तो इस सेक्शन से एग्जाम टिप में आप ले सकते हो कि आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी डेज डिड द कॉन्स्टिट्यूशन टेक टू बिल्ड, एज वेल एज व्हेन इट वाज अडॉप्टेड एंड हु वाज द चेयरमैन ऑफ इट्स ड्राफ्टिंग असेंबली। सेक्शन 2 में हम चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। ओरिजिनली Indian Constitution had 395 articles, but after amendments, it came up to 470 plus amendments now, and it is divided into almost 22 parts originally, but now it is almost 25 parts. Some of the important parts are, जैसे कि पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड पार्ट 5 में है यूनियन गवर्नमेंट, और ऐसे ही सब पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12 स्केड्यूल्स में डिवाइडेड है, जैसे कि फर्स्ट स्केड्यूल है यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज, 8th है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 10th है एंटी डिफेक्शन लॉ, और 12th है म्युनिसिपैलिटीज व्हिच हैज बीन एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट। Or 8th schedule, that is official languages. There are total 22 official languages in the Indian Constitution. तो एग्जाम फॉर दिस सेक्शन विल बी, यहाँ से बेसिकली कितने आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने पार्ट्स और स्केड्यूल्स है ये पूछे जाते हैं, एंड ऑल्सो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। तो चलिए अब सेक्शन 3 में बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस दैट यू विल फाइंड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कुछ फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं दैट इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट written constitution. It's a blend of rigidity and flexibility, federal system with unitary bias, parliamentary form of government, independent judiciary, secular and socialist nature, universal adult franchise. Fundamental rights and duties as well as its nature also include. It has been taken from different sources. The fundamental rights of the Constitution has been taken from the USA government. वैसे ही Directive Principles of State Policy लिया गया Irish Constitution से, and the federal structure has been taken from the Canadian Constitution. The secular and socialist nature of the Indian Constitution was added in the 42nd Amendment Act 1976. Basically इस section से आप expect कर सकते हैं कि salient features आ सकते हैं MCQs में, and also you can expect the question that which amendment has added the socialist and secular word in the constitution. तो इस section में हम जानेंगे some important articles which you need to remember, as it's the end of the video and I would like to notify you with some of the articles which you need to remember. Article 14, right to equality. Article 19 will be right to freedom. Article 21, right to life. Article 32, right to constitutional remedies. Article 40, organization of village panchayat, and Article 368, that is amendment processes. In this, the exam tip that I can give from this section is, usually there is the MCQs as well as match the following questions, जहाँ पे articles दिए जाते हैं and उनके subjects दिए जाते हैं. So you need to know the basic and these most important articles. If you want more reference, then you can refer to this book, that is the PM Bakshi, The Constitution of India, where even the Constitution and Amendments 2019 has also been added. You can refer to this book and get more such detailed knowledge regarding these
schedules as well as parts and the articles of the constitution. तो guys ये था पॉलिटी सीरीज का फर्स्ट पावर पैक सीरीज जहाँ पे थे आपके एग्जाम टिप्स, फीचर्स एज वेल एज फैक्ट्स रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डीप डाइव इनटू द फंडामेंटल राइट्स जो कि है पार्ट 3 में, जो है हर इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूशनल चॉकलेट. सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू. तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें गवर्नमेंट दृश को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्ट, स्मार्ट और सॉलिड प्रिपरेशंस. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए फोकस्ड रहो और गवर्नमेंट दृश के साथ ग्रो करो. सी यू.